Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Now the next question is, without plotting the points, indicate the quadrant of the points. Points को plot किए बिना आपको ये बताना है कि ये किस quadrant में lie करते हैं. So first is whose ordinate is -5 and abscissa is -3. So जो point है वो हो गया हमारे पास -5, -3, which gives us first sign is minus and next is minus, जो कि third quadrant में lie करता है. Next is abscissa and ordinate, दोनों 2 हैं. That means the point is 2, 2. That is plus are the signs and ये first quadrant में lie करता है. Last abscissa -1, ordinate 2. That means -1, 2, which is minus and plus. Now these kind of points they lie in the quadrant second. Fine. So without plotting the points हम कैसे लिख सकते हैं कि कौन से quadrants हैं? 4 quadrants हैं. आप उनके साइन कन्वेंशंस लर्न कर लीजिए. साइंस में कन्वर्ट करके उनको फिर क्वाड्रेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं.